Assalamu alaikum. My name is Fraz Shabbir and I represent Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. Today we are going to read prose from Second Year English, Book 2, Lecture number 4, Chapter number 2, Using the Scientific Method. Lesson number 2, Using the Scientific Method. Better attitudes, behtar ravaiye. By an attitude we mean the way we feel towards some idea or some event. रवैये से मुराद वो अंदाज है जिससे हम किसी ख्याल या किसी वाक़ये को महसूस करते हैं. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. अगर कोई शख्स ये यकीन रखता है कि किसी किस्म का तावीज़ पहनना इसे बदकिस्मती से बचाएगा तो वो तावीज़ पहनेगा और उसके बगैर बेचैन रहेगा. Feeling which involve fears such as this are called superstitions. इस किस्म के एहसासात जिनमें खौफ शामिल होते हैं तो तोहिमात कहलाते हैं. Superstitious people believe in signs of good or bad luck. तोहम परस्त लोग अच्छी या बुरी किस्मत की निशानियों पर यकीन रखते हैं. And their lives are greatly influenced by such signs. और इनकी ज़िंदगियाँ ऐसी अलामात से बड़ी हद तक मुतासिर होती हैं. Superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is sound basis for them. साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से तो हम परस्ताना अकायद ये साबित करने के लिए दबाए जा रहे हैं कि इनकी कोई ठोस बुनियाद ना है. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. आज बहुत कम लोग ये यकीन रखते हैं कि ये बुराई का सबब बुरी रूहें हैं. अब हम इस पैराग्राफ में सिनोनिम्स को देखते हैं. एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, बिहेवियर. चार्म का मतलब होता है तावीज़, एम्यूलेट. सुपरस्टिशंस का मायने है तोहिमात, नोशंस. सुपरस्टिशियस तो हम परस्त या वही बात फॉल्स आइडियाज़. इन्फ्लुएंस्ड कहते हैं मुतासिर होना, अफेक्टेड. बिलीव्स अकायद को, फेथ को. ईवल स्पिरिट बदरूह, डीमन या फील्ड भी कह सकते हैं. Through astrology and fortune telling are still practiced. अगरचा इल्म नजूम और मुस्तकबिल का हाल बताना अभी तक राइजुल अमल है. They do not influence the lives of as many people as they once did. लेकिन ये इतना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर नहीं करते जितना कि पहले करते थे. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. ये मालूम हो चुका है कि जो कुछ लोगों के साथ पेश आता है उसकी हमेशा एक माकूल फितरी वजह होती है. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors and the number 13. यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अभी बिल्लियों, काली बिल्लियों, शिकस्ता आइनों और 13 के हिस्से से खौफ नहीं खाते हैं. By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. साइंसी तरीक़ाकार से ये बात साबित हो चुकी है कि ख़यालात को सिर्फ इसीलिए ज़रूरी तौर पर ठीक कहना कि इन पर एक लंबे अरसे से यकीन किया जाता रहा ठीक नहीं. Ideas must now be supported by facts in order to be acceptable
to the scientist or to people who use the scientific method. سائنسدانوں یا ان لوگوں کے لیے جو سائنسی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، خیالات کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقائق پر مبنی ہوں۔ اب ہم اس پیراگراف میں جو سینونمز ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ پریکٹیسائزڈ کہتے ہیں رائج العمل، فنکشنل نیسیسریلی کا مطلب ہوتا ہے ضروری اور اس کا سینونم ہے ایسینشل۔ فیکٹس کا میننگ ہوتا ہے حقائق، ریئلسٹک۔ ایکسیپٹیبل کا میننگ ہوتا ہے قابل قبول اور اس کا سینونم ہے سیٹسفیکٹری۔ The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. سائنسدانوں کی دریافتوں نے وسیع نظری کے رویے کو پروان چڑھانے میں لوگوں کی مدد کی ہے۔ They are more willing to look for new truths than to assume that what has been considered true always be true. وہ بنسبت یہ فرض کر لینے سے کہ جو کچھ درست سمجھا جاتا رہا ہے ہمیشہ درست رہے گا، نئی سچائیوں کو تلاش کرنے کے زیادہ خواہش مند ہیں۔ Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists, they are less likely to accept conclusions as final. چونکہ لوگوں کو سائنسدانوں کی نئی دریافتوں کے سبب اپنے پرانے خیالات تبدیل کرنے پڑے ہیں، اسی لیے اس بات کا امکان ہے وہ نتائج کو حتمی تسلیم کر لیں۔ اب ہم اس پیراگراف کے سینونمز کو دیکھتے ہیں، ان کے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ اوپن مائنڈنس، وسیع النظری، لبرلزم، ویلنگ، پرجوش، ڈیزائرس، ایزیوم، فرض کرنا، سپوزیشن، کنکلوژن، نتائج، ریزلٹس۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا پروز نمبر 2 تھا، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ اس کی ہم نے ریڈنگ کی، اس کے سینونمز دیکھے جو کہ یہاں پہ اختتام ہوتے ہیں۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کل جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اس کی ایکسرسائز، اس کے شارٹ آنسرز کے متعلق ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔